हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? लास्ट टॉपिक एनी डाउट? नो, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक पहले। फिर लास्ट टॉपिक हमने किया था, we have done some formulas. That first one is sine 90 into n plus minus theta. It is better if we say this as t. T 90 into n plus minus theta, where t can be any trigonometric ratio. So हमने किया था कि if n is odd, then sine will change into cos, and cos will change into sine. Similarly, tan will change into cot, and cosec will be changed into sec. और हमने कहा था कि if n is even, then no change, but sine जो होगा, sine जो final answer में आपके sine आएगा, that will be decided by the original trigonometric ratio. Sine will be decided by the original trigonometric ratio. ठीक है, तो ये हम कर चुके थे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose we have this question, sine 120 degree. We have to solve this sine 120 degree. So this can be written as sine 90 into 1 plus 30 degree. So now 90 into 1. Now this is an odd number, so sine will change into cos. So this will become cos 30 degree. And this original ratio will decide the sine. So this complete 120 degree angle, which lie in which quadrant? The second one. 120 degree will lie in the second quadrant. So in the second quadrant, this sine is positive. So we'll finally get this positive. Now what is cos 30? This one is root 3 by 2. So any doubt in this question? No sir. Okay. Is there any student who have a first class today? Excuse me, sir. किसी की first class है आज? Yes sir. कौन है? हमाद। हमाद लास्ट क्लास में थे आप शायद, सैटरडे? जी सर, एक क्लास हो गई थी बस। अच्छा, एक क्लास में, कोई इशू नहीं। ठीक, सो हमाद इसमें कोई डाउट है? इन दिस क्वेश्चन एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज find the values of the following trigonometric ratios. So first is sine 315 degree. Second is cos 210 degree. Third, cos minus 480 degree. Fourth, sine minus 1125. Fifth, sine 765 degree. Sixth, cosec 1410 degree. Please try to do this question.
वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आंसर एनीवन? Was 45. First is 1 by root 2. okay. So minus 1 by Minus. So this answer is minus 1 by root 2. Minus ठीक है बिल्कुल. So second answer is minus root 3 by 2. Minus root 3 by 2. Great. This is minus root 3 by 2. So minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Manas, आपके आंसर सही? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So fourth is positive 2. Fourth is positive 2 और 1. This is sign, तो 2 तो नहीं हो सकता है. 1 by root 2 plus 1 by root 2. Fourth is 1 by root 2. इस पर यही है आंसर आपका? Yes, sir. Sir, minus 1 by root 2. Which one? Fifth one. नहीं, fifth is not minus 1 by root 2. Fifth is 1 by root 2. Plus 1 by Plus Sorry, 1 by sir. Plus 1 by root 2. 2. Next one. plus under root This one is 6 is plus 2. plus 2 नहीं. No. Anyone else? Sixth answer
-2. -2. Great. Answer is -2. कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इवन जिनकी फर्स्ट क्लास भी है आज? Yes, sir. Who's there? किसको समझ में नहीं आ रहा है? Sir, मुझे मुझे योर नेम? Manaswin. मनस्विन. ओके मनस्विन, लास्ट क्लास में आप थे ना? So, ये Yes, sir. समझ- But मैंने ये वाला नहीं किया था, sin 315 वगैरह. अच्छा अच्छा, तो मनस्विन ये क्लियर हो गया था, sin 9 into n plus minus theta. So if this n is odd, then this sign will change into cos. ये क्लियर हुआ था नहीं? Yes, sir. ओके ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. If n is odd, then this sign will change into cos. So this will become cos theta. And if this complete angle lie in the second quadrant, then this will be positive. ठीक है, उसके बेसिस पे हम ट्राई करते हैं. So take the first question. So always आपको जब भी एंगल गिवन है, तो आपको हमेशा एंगल को ब्रेक करना है into 90 डिग्री. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Always divide this with 90. Always. ठीक है, so this is 270. So this is 45. ठीक, so now this can be written as sine. This can be written as 90 into 3. 90 into 3 plus 45. ठीक है मनस्विन, इतना क्लियर हो? Yes, sir. Okay मनस्विन, now this is odd, so this sign will change into what? Cos. Into cos. So this is cos 45 degree. Okay, this is cos 45 degree. Okay, Manishan, this 315 degree line, which quadrant? Manishan, this 315 degree line, which quadrant? Third quadrant. Okay, Manishan, this is 0. Okay, this is 90 degree. So this is 90. Again add 90, so we get this 180. Again add 90, so we get this 270. Again add 90, we get this 360. Fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrant. Okay, so this is first quadrant, this is second quadrant, this one is third quadrant, and this one is fourth quadrant. Okay, in the first quadrant, all are positive. हमें वैसे याद रखना है, all school to college. So in the first quadrant, all are positive. In the second one, sine is positive and its reciprocal. In the third one, tan is positive and its reciprocal. In the fourth, cos and its reciprocal. Now 315, it's mean after this 270, so this line in the fourth quadrant. Now in the fourth quadrant, what is sine? Sine is positive or negative? Negative. Negative. So this is minus. Now what is cos 45? 1 by root 2. So this becomes minus 1 by root 2. ठीक है मनस्वी? Yes, sir. ओके, और यश की भी आज फर्स्ट क्लास है. हाँ यश, इतना क्लियर हुआ? यश, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यश, Sir, second quadrant में क्या क्या positive है? हाँ बस अभी देखते हैं. ओके ठीक है यश, इतना क्लियर हुआ? मनस्वी, remember like this, in the first quadrant all are positive. ठीक है, learn like this, all school to college, A S C T C. So in the first quadrant all are positive. Second is sine is positive. So if sine is positive, then it's reciprocal. Sine का reciprocal क्या होता है? Cosec. Cosec. So in the second quadrant, sine and cosec are positive. Except these two, every trigonometric ratio is negative. Okay. ठीक है मनस्वी? Yes, sir. In the third quadrant, T for tan, so tan and its reciprocal, cot. These two are positive, other are negative. In the fourth, cos and its reciprocal, that is sec, are positive. Except these, all ratios are negative. Okay. Yes, sir.
यश आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है. Now take next question, cos 210 degree. Again we have the same method. Divide this angle with 90. So this is 180. So we get 30. So this can be written as cos 90 into 2 plus 30 degree. Now this is equal to. Now Manishwan, this is even. So cos will remain cos and we will get cos 30 degree. Now this 210, Manishwan, this 210 line which quadrant? Sir, the third quadrant. Third quadrant. So in third quadrant, this cos is negative or positive? Negative. Negative. So put a negative sign. Now what is 30? Root 3 by 2. And this is negative. Yes, clear है? ये doubt है इसमें? Clear, sir. Clear. Yes, then try question number third. Yes, sir. Okay, what's the answer? Same, minus 1 by 2. Yes, and Manaswan, what's the answer of third question? Minus 1 by 2, sir. Minus 1 by 2. Okay. Manaswan, same answer? Yes, sir. Okay, then try fourth, fifth, and sixth. So 1 by root 2. 1 by root. Next fifth. Excuse me, sir. Yeah. Sir, this 1125 will lie in which quadrant? 1125. Check it then. So first of all, we have the same method. We will divide this with 90. So 90 into 1, 90. So this is 22. 9 to 180. So we get 44. Okay. So we will write this 90 into 12 plus 45. Okay. This is 0, this is 90, this is 180, this is 270, and this one is 360. Okay. Now this 360 can be written as 90 into 4. Okay, Yash? Yes, sir. Okay, suppose we have an angle 90 into 4 plus 10 degree. ये किस quadrant में lie करेगा? First quadrant. First quadrant. Okay. Yes, sir. So suppose इसको हम लिखते हैं 90 into 8. तो 90 into 8 कहाँ आएगा? 90 into 4 यहाँ था. तो 90 into 8. 0 degree. Again at this position. Yes, sir. So if we write 90 into 8 plus 10, then this angle will lie in which quadrant? First quadrant. First quadrant. It's mean अगर 4 का जब भी multiply आ रहा है in 90 अगर 4 का multiple आ रहा है तो वो हमेशा यहीं आएगा. Yes, sir. So suppose we have this 90 into 100 plus 10 degree. So किस quadrant में lie करेगा? First. First quadrant. ठीक है. So ये नंबर अगर 4 का multiple है तो हमेशा वो यहाँ इसी लाइन पे आएगा और फर्दर आप जो भी एंगल ऐड करते हैं, so if that angle is less than 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा.
So this angle will lie in which quadrant? First quadrant. First quadrant. So आपके पास अगर एंगल है 1000, 2000, 10,000, आपको ऐसे ही करना है. Always write this as a 90 into something और फिर उसमें देखिए if it's a multiple of 4 तो again lie करेगा on this line. Manisun and Yash, fifth हो गया. Yes, sir. Okay, next sixth. Sir, 6 कर रहे हैं अभी. ठीक ठीक. Sir, odd cosec किस में change होगा? If n is odd, then cosec will change into sec. If n is odd, then cosec will change into sec. Yash, solve हो गया sixth. Yes, sir. Maniswan. Yes, sir. Sir, एक question था. हाँ जी. Sir, इसमें n 4 का multiple नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे lie करेगा quadrant में? Check करते हैं इसको. So this is 1410. So this is 90 into 1. 90. So this is 51. So this is 450. So finally we get 60. So this can be written as 90 into 15 plus 60. Okay. तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम 12 तक चेक कर रहे हैं. 90 into 12 कहाँ लाई करेगा? At this. ठीक है मनीषवन? Maniswan, 90 into 12 will lie on this. Yes, sir. Then 90 into 13 here. Yes, sir. 14, Yes, sir. 15. Yes, sir. ठीक है. 15 ही आ गया प्लस 60 कर दिया. किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Sir, 4th. क्लियर हो? सो अगर एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल नहीं है तो उसके जो भी क्लोजेस्ट है, जो क्लोजेस्ट था 12 वो हमने यहाँ तक ले लिया. उसके बाद फिर हमने काउंट कर लिया. ठीक है ना? Maniswan, any doubt in these types of questions? Yes, sir. Answer आ गया. ठीक है, great. Any other student? किसी को डाउट है in these types of questions? No, sir. नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट भी हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूलेज हैं. नेक्स्ट फॉर्मूलेज
first is sine minus theta, cosec minus theta, tan minus theta, cot minus theta, cos minus theta, sec minus theta. Always remember sine minus theta is minus sine theta. Okay, just remember three formulas. Sine minus theta is minus sine theta, tan minus theta is minus tan theta, and cos minus theta is cos theta. Remember these three formulas, that sine minus theta is minus sine theta, tan minus theta is minus tan theta, and cos minus theta is cos theta. ठीक है? सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, अदर these two are negative. So अगर sin नेगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आएगा. So cosec minus theta क्या होगा? Cosec minus theta is equal to 1 by sin minus theta. So if this sin minus theta is negative, so ये भी negative हो जाएगा. इसको लिख देंगे हम 1 by minus sin theta. 1 by sin is what? Cosec. So this is equal to minus cosec theta. So if sin is negative, cosec भी negative होगा. Similar case, tan is negative, so cot भी negative होगा. So this is minus cot theta. Now if cos is positive, तो sec भी positive हो जाएगा. So always remember, if the angle is negative, then only cos is positive. सिर्फ cos positive होगा और सब ratios negative होते हैं. Cos positive है तो उसका जो reciprocal है, that is sec, that is also positive. Cos sec positive हो जाएंगे, other ratios are negative. किसी को doubt है इसमें? नो सर. ठीक है, इसको प्लीज नोट कीजिए. एक प्रूफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कैसे. इससे पहले क्वेश्चंस करवाए थे sin 90 into n plus minus theta. अर्षित आपने कब ज्वाइन किया है? सर जस्ट अभी. अच्छा, जस्ट अभी किया. अभी हमने क्वेश्चंस किए थे sin 90 into n plus minus theta बेस्ड, जो हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूलेस किए थे. ठीक है, तो क्वेश्चंस एक दो हम अभी और करेंगे. सो राइट दिस फॉर्मूलेस. That in this case cos is positive and sec is positive and other ratios are negative. हेलो सर. जी सर वो ठीक है सर. इसको हम क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट से प्रूव कर सकते हैं सर. जी बिल्कुल, उससे ही करेंगे हम अभी. ठीक है, अभी करते हैं इसको. इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर प्रूफ करते हैं इसको. कर दिया सर. ओके चलिए, इसको रब 2 कर मिनट देते सर. हैं. ओके हो गया सर. थैंक यू सर. ठीक है, हम प्रूफ करते हैं फिर. So this is first quadrant, and in this quadrant हम एक angle लेते हैं, this angle. So we are measuring this in anti-clockwise direction. So this is theta. ठीक है, हम ये कर चुके हैं कि अगर हमारा angle जो है वो anti-clockwise direction में हम measure कर रहे हैं, then angle is positive. Otherwise so this angle is positive. Let this point be x comma y. So what is this? This will be under root of x square plus y square.
So okay, these two are positive. Let this be A. This is O. This is B. Now, first case, sin theta क्या हो जाएगा आपके पास? Sin theta is P by H. Now, in this case, what is perpendicular? Y. Y. And hypotenuse is, let's say this is R. ठीक है, under root x square plus y square. Let this be R. So y by R. Now, this angle is measured in anti-clockwise direction. That's why this angle is positive. If you are measuring this angle in clockwise direction, for example, हम इस direction में measure करते हैं. In this direction, so this direction is clockwise. So this angle will be negative. ठीक है, ये हमने पहले किया था. If the angle is in anti-clockwise direction, then angle is positive. If angle is measured in clockwise direction, then angle is negative. So let this be A dash. Now, what is the coordinate? This will be x, comma, minus 1. Now, what is r? R is under root of x square plus y square. So, in this case also, minus y whole square is, so this is x square plus minus y whole square. So, this is again r. Now, अब हम find करते हैं sin minus theta. So, this is what? Again, P by H. Now, what is perpendicular? Minus y and hypotenuse is r. So sin minus theta. So sin minus theta, this is equal to minus. Now what is y by r? Y by r is sin theta. So we get sin minus theta is equal to minus sin theta. ठीक है? ये क्लियर हुआ? हमद, हार्दिक, हर्षित, Yes, sir. ठीक है. So we get this formula sin minus theta is equal to minus sin theta. So similarly हम प्रूव कर सकते हैं tan minus theta, यानी जहां भी आपके पास y आ रहा है, we can prove that is equal to minus. Okay. अब हम cos देखते हैं जो हमारा पॉजिटिव आ रहा था. So cos theta is what? Cos theta is b by h. Now what is base? Base is x by r. Now find cos minus theta. This is equal to b by h. Now what is base? Again here x, and this is r, and so this is equal to cos theta. So ये clear हो? Cos minus theta is equal to cos theta. Yes, sir. ठीक है. Similarly tan भी proof हो जाएगा क्योंकि tan में भी y आ रहा है. It's mean जिस trigonometric ratio में आपके पास y आएगा वो negative हो जाएगा क्योंकि y negative हो रहा है, और जिस रेशियो में x आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा. So similarly we can prove tan also. ठीक है, tan भी कर लेते हैं. So third, so tan theta is equal to what? P by b. Now what is p? Y, and what is base? X. Next is tan minus theta is equal to p by b. What is perpendicular? Minus y by x. Now this minus y by x is what? Tan theta. So this we get minus tan theta. So sin and tan are negative, cos is positive. अब आप जब reciprocal करोगे तो cos का जो reciprocal होगा वो positive आएगा. It's mean cos बच्चे क्या डाउट है? And what's your name? जिनका ये सेव है with Redmi name. एक स्टूडेंट को डाउट है, वो सेव हिज नेम एज Redmi. बच्चे व्हाट्स योर नेम? ओके. Nubu, this is your first class? Yes, sir. Nubu, this is your first class? Yes, sir. Okay. So you have the basic knowledge of trigonometry? Yes, sir. I have studied in 10th standard. Okay. No issue. Please take this. This is the first quadrant. Okay. So in this quadrant, we have this coordinate x comma y. Always remember, if an angle is measured in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means opposite direction as that of clock. Clock ये होती है हमारी. Clock move करती है in this direction. तो इसके opposite जो direction होगी, that is anti-clockwise direction. So this is a convention that if an angle is measured in anti-clockwise direction, then the angle is
positive. So if you are measuring the angle in this direction, so we will take the angle as positive. If angle is measured in clockwise direction, then we take the angle as negative. So this direction is anti-clockwise, so this angle is positive. This angle is clockwise direction, so angle is negative. ठीक है नोबू, इतना clear हुआ? Yes, sir. Okay. Now sin theta is what? It is perpendicular by hypotenuse. This is x comma y. So this one will be x and this will be y. Hypotenuse हमने कहा hypotenuse is under root of x square plus y square. So take this as r. R is equal to under root of x square by plus y square. Now what is the perpendicular in this triangle? Why, sir? Y. Okay, so perpendicular is y and hypotenuse is r. So we get y by R. r. Now take this triangle. So this is sine minus theta. This is again p by h. Now what is perpendicular in this case? Minus y. This is the first quadrant. So x is positive, y is positive. This is the fourth quadrant. Here the x is positive and the y is negative. So this quadrant is x comma minus y. Itna clear हुआ? Yes. Okay, so perpendicular Yes, is sir. what? Perpendicular is minus y. Minus y by r. Minus. Now, what is y by r? What is y by r? Nubu? Nubu, हमने यहाँ find किया था ना sin theta is equal to y by r. Cos. है ना नुबु? हमने यहाँ find किया sin Cos. theta is equal to y by r. नुबु ये क्लियर है? हमने यहाँ find किया था sin theta is y by r. Cos. So this is Cos, y by sir. r. ठीक है? Y by r is sin theta. So this is p by h is equal to minus y by r. So in place of this y by r, we can write sin theta. So we get sin minus theta is equal to minus sin theta. Says. Okay. So similarly, cos theta is what? B by h. And now what is base? Base is x. So we get x by r. Cos minus theta is b by h. Here the base is again x. So we get x by r. And in this place of x by r, we can write again cos. So we get cos B minus by- theta is equal to cos theta. Okay. So similarly, we have this tan theta is p by b, y by x. So tan minus p theta is p by b again minus y by x is equal to minus tan theta. ठीक, so please Yes. note this. Start करते हैं फिर. ठीक है हर्षित, तो जो आपका मिस हुआ है अब करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस. ठीक है, रब करते हैं, सबने नोट कर लिया इसको. Yes, sir. Try this question. Question is tan minus 480 degree. Please tell me the answer of this question. minus root 3. Answer is minus root 3. Anyone else? Kasfil, again check the answer. Root 3. Answer is root 3. किसका आंसर है? What's your name? Nubu, sir. Okay, Nobu. Okay, great. Answer is root 3. Try किया सबने? Yes, sir. सर पर मेरा -√3 आ रहा है. Minus root 3 है, अभी चेक कर दें. देखिए, we have this.
Positive root 3, sir. Positive root 3. We have 10 minus 480. So 10 minus theta is what? Minus tan theta. जिनका पॉजिटिव आ रहा है उन्होंने, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, उन्होंने यही मिस्टेक तो नहीं किया, नेगेटिव लिखा था यहाँ, वो भूल गया था सर. ओके प्लीज लिखिए, अब हो जाएगा tan. ठीक है, अगेन वी हैव द सेम मेथड, डिवाइड दिस एंगल विद 90. We get 30, so write this as 90 into 5 plus 30 degree. This is minus 10, sorry. So this is 10, this is odd, so this will change into cot 30 degree. अब साइन डिसाइड करते हैं, हमारा साइन क्या होगा, दिस लाइन विच क्वाड्रेंट, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ गया, 5 plus 30, इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट. So सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव. So this become positive, so we get cot 30. Okay, so this is what, root 3. सबको क्लियर हुआ ये? यस सर. सर अब आगे सर. ठीक है. मनस्विन क्लियर हुआ? मनस्विन क्लियर हुआ ये? हमाद, हार्दिक, हर्षित? यस सर. ओके Yes, sir. ठीक है, सौरभ कर. सर ठीक है, एनी डाउट इन लास्ट टॉपिक? कोई डाउट है तो बच्चे प्लीज बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर बेस्ड है. अगर वहां भी आपको डाउट है तो यहाँ प्रॉब्लम करेंगे आप. एनी डाउट इन लास्ट टॉपिक? एनी डाउट? नो सर. नो सर. ओके देन, No, sir. अब आपसे हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि 11th और 12th में मैक्सिमम जो एंगल्स होंगे वो अब आपको डिग्री में नहीं देगा, वो आपको रेडियन में देगा. ठीक है, तो हम देखते हैं रेडियन में हम कैसे डील करेंगे. So suppose we have this pi by 2 into n plus minus theta. So pi by 2 is what? 90 degree. 90. So 90 into n. So if this n is odd, first case n is odd, then again same, sign will change into cos and so on. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने यूनिट चेंज कर दिया. लास्ट केसेस में हम डिग्री में डील कर रहे थे, नाउ वी विल डील दिस इन रेडियन. सो पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री, सो 90 into n, if n is odd then sign will change into cos and vice versa, and sign हम वैसे डिसाइड करेंगे that this original ratio will decide the sign. If n is even then sign will remain sign and so on. ठीक है, ओके अब हम देखते हैं, इसको प्लीज नोट कीजिए. देखते हैं कि रेडियन में क्वेश्चन और सिंपल हो जाते हैं, कैलकुलेशन हमारी और रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, हम देखते हैं कैसे करें. रब कर दें इसको. यस सर. Suppose we have this question tan 4 pi by 3. Please try this. इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है. ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, जस्ट टेक कीप दिस इन रेडियन. Minus root 3 by 2. माइनस Root 3 by 2. minus root 3 by 2. Great. This is the answer. ठीक है, अब हम ये भी याद रखेंगे कि हमें पता है 90 into odd होता है, then we will change the trigonometric ratio. Next हम ये भी याद रखेंगे कि if we have pi plus theta, minus when if this is tan pi plus theta, then this is pi. तो pi अगर है तो कोई चेंज नहीं होगा. प्लीज याद Yes, sir. रखिए, pi 2 pi 3 pi 4 pi. अगर pi है तो no change, so tan will remain tan. This remain tan theta. Now just check the quadrant. In which quadrant this angle will lie? That we can't say, sir. Maniswan, in which quadrant this will lie? Fast, sir. First, okay, देखते हैं. Maniswan, this is 0 degree. This is what? 90 degree. 90. This one?
180. 180. Okay. 270. This one 270. 270. And this one 360. 360. Okay. Now tell me in radian. What is this angle in radian? मनीषन आपका ही मिस हुआ है ना रेडियन एंड Yes sir, मेरे को रेडियन नहीं पता है. अच्छा ठीक है बच्चे जिनकी क्लासेस मिस हुई है ना मंडे के बाद से हम बैकअप स्टार्ट करेंगे सो मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे जिनका भी मिस हुआ है हम ट्यूसडे से बैकअप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप कवर कीजिएगा ठीक है जस्ट 2 more days उसके बाद हम शुरू करते हैं सो दिस इज 90 दिस विल बिकम पाई बाय 2 180 इज पाई जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे थे उनको पता है दिस इज पाई this is 3 pi by 2 and this one is 2 pi convert कैसे करते हैं जिनका मिस हुआ है वो हम ट्यूसडे करेंगे फिर बैकअप में ओके सो 90 is pi by 2 now pi plus theta अब मनीषन आप बताओगे in which quadrant this will lie pi plus theta Sir, fourth quadrant. Sorry, third quadrant. third quadrant okay so in third quadrant tan is what positive or negative Sir, positive. positive so this will remain positive ठीक है तो अब हमें याद रखना है pi by 2 का अगर pi by 2 के साथ n है और n is odd तो चेंज हो जाएगा pi है 2 pi 5 pi 100 pi 1000 pi 5000 pi अगर pi है then no change ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन कितने एनी डाउट यस सर 10 पाई प्लस थीटा में थीटा थर्ड क्वार्टर में फॉल कर रहे हैं हम हाँ हम इसलिए कर रहे हैं कंडीशन नहीं होता हाँ नहीं थीटा को हमने एक्यूट लिया है अच्छा ठीक है थीटा हमने एक्यूट लिया है क्योंकि हम यहाँ भी जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसको जब ब्रेक करेंगे तो थीटा हमारा एक्यूट आएगा इसलिए ओके ठीक है अभी हम और देखेंगे ओके एनी अदर स्टूडेंट किसी और ने सॉल्व किया था विदाउट चेंजिंग इनटू डिग्री खसफल का हो गया था और किसी स्टूडेंट ने चेंज सॉल्व किया था इसको नो सर और किसी नहीं किया okay. हर्षित हार्दिक सॉल्व हुआ था ये नो सर ओके ठीक है सो नाउ वी हैव 2 फॉर्मूलेस एक हमारे पास पाई बाय 2 फॉर्मूला है रेडियन में हम सिर्फ ये 2 फॉर्मूलेस करेंगे हमारे पास कोई भी एंगल आता है वी विल यूज ओनली दीस 2 फॉर्मूलेस एक हमारे पास पाई बाय 2 का है जो हमारे पास मल्टीपल होता है n होता है n इज ऑड तो हमें पता है वहां हम रेशियो चेंज करते हैं सेकंड हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमारे पास पाई अगर है देन नो चेंज सो आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है फर्स्ट चेक कि क्या वो पाई में ब्रेक हो रहा है आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियन कन्वर्ट मत कीजिए उसको डिग्री में वो टाइम लॉस करेगा जस्ट चेक कि क्या वो पाई में ब्रेक हो रहा है तो चेक कीजिए क्या ये पाई में ब्रेक हो रहा है यस कैलकुलेट कीजिए पाई प्लस पाई बाय 3 अगेन 4 पाई बाय 3 हार्दिक हर्षित हमाद यस क्लियर हुआ यस सर हमेशा चेक कीजिए आपका क्वेश्चन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में अगर ब्रेक हो रहा है तो कैलकुलेशन वैसे ही आपकी कम होगी नाउ पाई प्लस पाई बाय 3 हमें पता है इफ दिस इज पाई देन साइन विल रिमेन साइन सो वी गेट साइन पाई बाय 3 okay now in which quadrant this will lie Harshit Bish Sir, the third quadrant. in third quadrant okay so pi plus pi by 3 in the third quadrant sign is positive or negative Sign is negative. sign is negative so put a negative sign now what is this pi by 3 means 60 what is sin Yeah. 60 Sin 60 is root 3 by 2. Yeah. Okay, sir, got it. any doubt in this question any student नो okay So we can take this pi as 180 degree and then also solve ना. you want to convert this into degree Yeah. Means उससे भी कर सकते हैं ना, बस थोड़ा complicated बन जाए. बिल्कुल कर सकते हैं बट हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें रेडियन में ही आ जाए क्योंकि अब 11 12 में ना मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियंस में ही आएंगे तो हम मतलब इवन इफ इन 12th यू आर डूइंग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो और आपके पास ट्रिगो का यूज है तो एंगल वो डिग्री में नहीं देगा वो रेडियन में देगा तो अब हम यूज्ड टू हो जाएंगे रेडियन को डायरेक्टली सॉल्व करने में वरना क्या होगा हमारा टाइम लूज हो रहा है क्वेश्चन कुछ और था छोटे से कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो पहले हम डिग्री कन्वर्ट कर रहे हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
और रेडियन में कैलकुलेशन ज्यादा इजी होती है ना? अभी हम देखते हैं, अभी आपको पता चलेगा ये क्लासेस के बाद। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन साइन। प्लीज ट्राई दिस। ओके हर्षित, इस क्वेश्चन को करते हैं तो इससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका डाउट है हर्षित बेश, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इससे भी क्लियर होगा आपका। minus root 3 by 2 again. आंसर इज माइनस Root 3 by 2. 3/2। किसका आंसर है ये? खसपल का। Yes, sir. ओके Minus root 3/2, sir. ओके, सो दिस आंसर इज नुबु, शिवम नुबु। Yes, sir. ओके एनीवन एल्स? Excuse me, sir. So minus root 3/2. माइनस रूट यस युवराज। The sine would be the length of the hypotenuse, the length of the perpendicular or the base. व्हाट? The value of sine would be the value of the perpendicular or the base in that triangle. We have this sin theta is p by h. So this is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Sir, we have that na ki x coordinate and the y coordinate represent the sine theta and the cos theta. No, हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था कि साइन जो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, आप अच्छा ये साइन नहीं पूछ रहे हैं, आप ये साइन पूछ रहे हैं ना? Yes, sir. ओके देखिए, थीटा माइनस थीटा में हमने ऐसे डील किया था, और उससे पहले आई थिंक आपकी क्लासेस मिस हुई हैं। युवराज हैं आप? Yes, sir. ओके हाँ युवराज, आपकी ना स्टार्टिंग क्लासेस मिस हुई हैं, तो उसमें हमने करवाया था कि ये कैसे आता है। तो अभी तो आप प्लीज याद रखिए ना, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में मुझे 20 मिनट्स फिर लग जाएंगे। तो ट्यूसडे जो बैकअप होगी उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे फिर ये कैसे आ रहा है। Thank you, sir. ठीक है, टिल दैट टाइम प्लीज रिमेंबर लाइक दिस कि ऑल आप सब, आप स्कूल में हैं, स्कूल से स्कूल टू कॉलेज आप शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर 2 years. So remember like this, all school to college, as a sine t is tan, c is cos. So, I guess I attended the class. We made a triangle, and Yeah. then there was a thing that as the value of x is minus, then sine would be minus. So that was the thing I was asking, that the base would represent sine or the perpendicular of that triangle. Both will decide the sine, base and perpendicular, both will decide. Now in this sine theta, hypotenuse will always remain positive. Yes, sir. So hypotenuse will never decide the sine. So in case of sine theta, this sine will depend on perpendicular only. So, sir, the y-axis tells us about the sign. Like if y is positive, sine will be positive, and y is Yes. negative, sine. In sine theta, Yes. theta and cos theta, but in tan theta both will decide because this is p by p. Yes, sir. So that was I asking, that cos would depend on the x-axis and sine on the y-axis. Sorry, I thought this is your first class. So, No, no, sir. now after this you have another class The bio class, I guess. at 8:30. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अब कुछ दिन के बाद हम फिर अपनी टाइमिंग को भी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि 1 hour में हम ज्यादा पोर्शन कवर नहीं कर पाते हैं। सो बस 2-3 days आप और वेट कीजिए, टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज कर देंगे, बैकअप क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Thank you, sir. यू मोस्ट वेलकम। होमवर्क प्लीज नोट कीजिए। Try to do exercise 3.2 NCERT. So how will we do this question? Uh, Sine 5 root by 3, Sorry. because it's in the fourth quadrant. this one, this is in fourth quadrant, so this can be written as sine 2 pi minus pi by 3. 6 minus pi is 5. Now this is pi, so sine remains sine pi by 3.
and this will lie in the fourth quadrant, so this is negative. So answer is minus root 3 by. So your homework is exercise 3.2. ठीक है, only this one. Try to do this. कल हम continue करते Sir, question. Yes, Minister. पाई प्लस में हमने पाई को नहीं लिया वापस. Minister, what's your question? Sir, in sin pi plus pi by 3, उसमें हमने pi को नहीं लिया वापस solve करते समय. नहीं, ये formula है that sin pi plus theta. We have this formula sin plus pi plus theta is where theta is acute. This is sin theta and minus. Okay, this is a standard formula. ठीक है मनीषवन? Yes sir. ठीक है मनीषवन, बैकअप में इसको और डिस्कस करेंगे. आपकी क्लासेस मिस हुई हैं. That's why you are facing the problem. Yes sir. Sir, बैकअप कब है? बैकअप ट्यूसडे होगी. मैं आपको कल फाइनल टाइमिंग्स बताया. Yes sir. Okay class. Thank you. Thank you, sir. Okay, you're most welcome. Thank you, sir.